वालेकुम सलाम। चलो, सो रेडियस ऑफ योर nth ऑर्बिट क्या होता है बेटा? याद है किसी को? अभी बताया था मैंने। जनरल फॉर्मूला, रेडियस ऑफ योर nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू योर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर 4 into your pi square k into your e square into m into your n square divided by z, isn't it? Or else radius of your nth orbit is equals to 0.529 n square divided by z. Unit क्या होता है इसका? Angstroms. This is for your one electron system बेटा. This is for your one electron system. उसी तरह से हम लोग ने ऑलरेडी आज क्लास में ये भी करे थे, velocity of your electron in nth orbit. Velocity of the electron in nth orbit in your Bohr model. ठीक है ना? Velocity of the electron in the Bohr model. क्या था बेटा फॉर्मूला? Velocity of your nth model is equals to your 2 pi k into your e square divided by your h into your z divided by n. इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? आप लोग ने बोला था Vn is equals to 2.18 into 10 to the power of 6 into z divided by n. Unit is meter per second. So velocity of your nth orbit ये हो गया बेसिकली, ठीक है ना? अब चलो देखो बेटा, when electron is been revolving, तो क्या होता है कि it is also moving as it is moving in a circular path. As it is moving in a circular path, तो उसकी एक angular speed भी आ जाएगी. तो हम लोग उसकी एक एंगुलर स्पीड के बारे में बात करें, एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है? सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर एंगुलर स्पीड, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट रेडियस, मान के चलो ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना? तो इसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ पर कहीं पर अपने पास इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज मूविंग विद अ सर्टेन लीनियर वेलोसिटी v. तो क्या उसके साथ साथ इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी बेटा ओमेगा, और ये हो गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, हो गया होगा वेलोसिटी ऑफ योर nth ऑर्बिट. तो फ्रॉम द रिलेशन v is equals to your r into your omega. So nth orbit, radius of nth orbit, velocity of nth orbit. So omega n will be equal to your vn divided by your rn, ठीक है ना? तो Vn का फॉर्मूला अभी ऊपर लिखा है अपन ने, देखो यही लिख रहा हूं मैं, 2 pi into your k into your e square into z divided by your n into your h. ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं, into your radius of your nth orbit. Radius of nth orbit will be 4 into your pi square k into your e square m into your z divided by your h square into your n square. ठीक है ना? So if I'm simplifying this one, you are getting angular frequency of your nth orbit will be equal to your, this will be equal to your 8 pi, this one is nothing but cube, this will be equal to your k square e power of your 4 z square into your m divided by your n cube into your h cube. So this is your angular frequency of your nth orbit. If you see very carefully here beta, angular frequency of your nth orbit is directly proportional to your z square divided by your n cube. Very important for the numericals. उसी तरह से omega angular frequency of nth orbit is directly proportional to your e to the power of your 4. ऐसा कुछ पूछा तो this will be the relation for this one. इतना याद रख लीजिए, that is more than enough. ठीक है ना बेटा? Angular speed. अगर हम लोग angular speed निकाल सकते हैं तो उसके साथ साथ we can also bring it out. ये हो गया मेरा फोर्थ पॉइंट, रेवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी. उसकी रेवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके पास तो n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बनेंगे, और टाइम पीरियड कितना लगेगा? सो टाइम पीरियड फॉर योर nth ऑर्बिट, टाइम पीरियड ऑफ योर इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, इन nth बोर ऑर्बिट, ठीक है ना? So let us try to talk about your revolutionary frequency and also the time period of your electron in your nth Bohr orbit. आपको मैं अच्छे से शॉर्टकट फॉर्मूलेस भी दूंगा बेटा इसके अंदर आज आप लोग को, ठीक है ना? बहुत अच्छे और बढ़िया शॉर्टकट्स भी हम लोग भी बताऊंगा इसमें, जैसे ये टॉपिक हो जाए. फ्रीक्वेंसी लिखने का तरीका देखो बेटा, ओमेगा n is equals to your 2 pi into your fn frequency. So frequency of your nth orbit will be equal to, frequency of your nth orbit is equals to कितना आएगा बेटा?
कितना आएगा? Fn is equals to your omega n divided by your 2 pi, ठीक है ना? So that will be equal to your omega n की वैल्यू यहाँ पर आई बेसिकली डिवाइडेड बाई 2 pi करो, इसको बाई 2 करो तो क्या हो जाएगा? देखिए ये दिस विल बी 4 pi square, this one is k square into your e power 4 into your m divided by your h cube into your z square divided by your n cube. That means frequency of your nth orbit is directly proportional to your z square divided by n cube. So this is your frequency of your nth orbit. Fn is directly proportional to your z square divided by your n cube. Clear? चलिए, वेरी गुड. इसी तरह इसके अंदर टाइम पीरियड बताइए. टाइम पीरियड. So time period of the electron will be equal to how much beta? Time period of the electron for the nth orbit of the Bohr's model. So reciprocal of the frequency यानी Tn will be equal to how much beta? 1 by Fn, isn't it? So frequency का reciprocal कर दीजिए. So this will be your h cube n cube. अभी देखो यहाँ पर ऊपर जो आया था basically. So इसका reciprocal that is n cube h cube divided by this is your 4 into your pi square k square e power 4 into your m. Isn't it? Into z square. Z square is also there. So this is z square. That means time period for your nth orbit is directly proportional to your n cube divided by your z square. Time period of your nth orbit is directly proportional to your n cube divided by z square. ये हो गया time period of your electron in the nth orbit. ठीक है ना? उसके बाद ये भी कराया था मैंने, फिफ्थ वाला देख लीजिए. करंट. करंट ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो फ्लो ऑफ द चार्ज विल ऑलवेज प्रोड्यूस व्हाट बेटा? करंट. तो इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं करंट ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन योर nth ऑर्बिट. इन योर nth ऑर्बिट. सो करंट ड्यू टू revolution of your electron in your nth orbit. देखो करंट कैसे लिखते हैं बेटा? In is equals to your charge of your electron divided by your t. t का फॉर्मूला क्या होता है? 2 pi by omega. ओमेगा वैल्यू ऊपर चले जाएगा, that is omega n. Or else I can write this one as E into frequency. Reciprocal of the time period is nothing but frequency. That means current of your nth orbit will be equal to E into frequency का फॉर्मूला 4 into your pi square k square e to the power of 4 m into your z square divided by your n cube into your h cube. यानी current in your nth orbit is directly proportional to z square divided by your n cube. ठीक है? इलेक्ट्रॉन से कैसे रिलेशन हो गया बेटा? e power 4 into e, यानी current in the nth orbit is directly proportional to your e to the power of your 5. अगर प्रॉब्लम में पूछा तो ठीक है ना? So once we know the current, I can also calculate the magnetic induction. क्योंकि सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगी because of the flow of your current. ठीक है ना? तो करंट निकाल, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं. ये पॉइंट नंबर 5 था. पॉइंट नंबर 6. ठीक है? So now if I am talking about your magnetic induction. Magnetic induction at nucleus due to electron in nth orbit. ठीक है? So magnetic induction due to circle क्या होता है बेटा? याद है किसी को? What is the general formula to the magnetic field due to the any part of a circle? जनरल फॉर्मूला याद है किसी को? जनरल फॉर्मूला for a magnetic field due to a current carrying coil in the circular shape. इस तरह से सर्कुलर शेप है. इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B is equals to mu naught divided by 4 pi into your I by your R into theta. Theta should be taken in terms of radians. For circle 360 degrees is equals to your 2 pi radians. तो मैग्नेटिक फील्ड बन गया B is equals to your mu naught divided by your 2 pi into your I divided by radius of your nth orbit. Because this is your radius of your radius of nth orbit, and in this one this electron is been revolving, isn't it? So now into theta. Theta value is how much for me? 2 pi. This pi will get cancelled. 2 1s are 2 2s are.
That means magnetic field B is equals to mu naught divided by 2 into your current in nth orbit and radius of your nth orbit. So it is depending upon the current in the nth orbit and radius of your nth orbit. यानी ये बन जाएगा मुझे B is equals to mu naught divided by your 2 into current of your nth orbit will be equal to how much? 4 pi square k square z square e power of 5 into your m divided by n cube into your h cube. उसी तरह से रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 4 into your pi square k into z into e square into your m divided by n square into h square. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा. सो इट इज 2 1s 2 2s 4 2s 8 यानी मैग्नेटिक फील्ड बन गया B is equals to your 8 pi to the power of pi square है यानी pi to the power of 4 ये हो गया म्यू नॉट ए वैल्यू ऑफ योर म्यू नॉट इनटू k की वैल्यू देखो यहाँ पर k स्क्वायर है यहाँ पर k है सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी k क्यूब z of your cube e to the power of 7 5 6 7 into your m square divided by n to the power of 5 and h to the power of 5. यानी magnetic field due to the nth orbit is directly proportional to your z cube divided by n to the power of your 5. This is the magnetic field का formula. n is nothing but what बेटा यहाँ पर orbit का quantum number. Orbit का quantum number. Quantum number. Clear है सभी को? चलो very good. नेक्स्ट वन मैग्नेटिक मोमेंट बताइए. 7th पॉइंट मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट due to electron in nth orbit. Magnetic moment due to electron in your nth orbit. ठीक है. मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला याद है बेटा किसी को? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला magnetic moment is represented by m is equals to your n number of turns into current into area of cross section. सर्कुलर कॉइल के लिए एरिया विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी पाई आर स्क्वायर. ठीक है ना. अगर मैं इसके लिए ले लूं इस तरह से, ठीक है ना, ये हो गया रेडियस ऑफ योर nth ऑर्बिट और इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन दिस वन. सो आई एम टॉकिंग अबाउट योर मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू एक नंबर ऑफ टर्न्स में 1 ही ले रहा हूँ. सो यहाँ पर n की वैल्यू ले रहा हूँ 1. तो ये हो गया करंट ड्यू टू योर nth ऑर्बिट into your area will be equal to pi into radius of nth orbit का whole square. अगर इसकी वैल्यूज डाल देना तो विल बी गेटिंग एज m of your nth orbit magnetic moment of your nth orbit is e into n into h divided by 4 pi into your m. 4 pi into your m. This is the magnetic moment. यानी इसका मतलब क्या है? It is independent of what? Atomic number. Z नहीं दिख रहा ना इसमें, देख लो एक बार. So it is independent of atomic number. Atomic number. ठीक है ना. अगर n की वैल्यू मैं 1 ले लूं इसके अंदर, so for n is equals to 1, magnetic moment is equals to e into your h divided by 4 pi into your m. ये आप ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में पढ़े होंगे. तो इसको बोलते हैं अपन, एक फेमस नाम है इसका. दिस वन इज नोन एज ऑफ योर बोर मैग्नेटॉन. ठीक है ना. तो ये था मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर. ठीक है. सो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हम लोग किया है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट किया है, उसके बाद एंगुलर स्पीड किया है, उसके बाद रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी किया है, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह भी किया हुआ है. इसमें थोड़ा स्टक हो रहा है, लेट मी सी. ठीक है. चलो
अस्मा ये क्या है बेटा, कितने बार एक बार बोल दिया मैंने, कर बता दिया ना, व्हाट इज दिस? हाँ, टाइम पास कर रहे हो? क्या एक बार टाइम पे फर्स्ट पेपर बताए? चलो नेक्स्ट वन देखो बेटा। नेक्स्ट वन, energy of electron in Bohr energy levels. Energy कैसे लिखते हैं बेटा? Sum of potential energy and kinetic energy. So energy of your nth orbit is equals to kinetic energy of nth orbit plus potential energy of nth orbit. Potential energy का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? K into your Q1 Q2 divided by R. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है आपने। और हम लोग को मालूम है m into from the first postulate Vn square is equals to K into Z into E square divided by radius of nth orbit. तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं energy of your nth orbit is equals to kinetic energy का फॉर्मूला half into m into your Vn square plus potential energy will be equal to minus of K into Z into your E square divided by R of your n. क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो साइन कन्वेंशन रखना जरूरी होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक न्यूक्लियस होता है ना, उसीलिए हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव साइन यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो एनर्जी ऑफ योर nth ऑर्बिट कितना बना बेटा? दिस विल बी इक्वल टू योर हाफ इनटू m into Vn square can be written as this one. So this will be equal to your K into Z into E square divided by radius of your nth orbit minus this will be K into Z into E square divided by radius of nth orbit. Half minus 1, that will be equal to your minus half. So it is minus of your half into K into Z into E square divided by radius of your nth orbit. So ये हो गया energy of the electron in the nth orbit का फॉर्मूला, isn't it? अगर हम लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो अपने को ये पता चलेगा कि magnitude of your nth orbit is equal to the magnitude of your kinetic energy of nth orbit, and that will be equal to half times the magnitude of the potential energy of your nth orbit. ठीक है ना? देख लो एक बार इसे कंपेयर कर लेंगे, है कि नहीं? अब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया तो एनर्जी ऑफ योर nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू योर माइनस ऑफ योर हाफ इनटू k into z into e square divided by radius of nth orbit को formula, that is your n square into your h square divided by this one is your 4 into your pi square k z into e square into your m. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो I'll be getting this one as energy in the nth orbit is equals to minus 2 into your pi square k square z square e to the power of 4 into your m divided by your n square into your h square. ये पूरा ऊपर जा रहा है ना, इसलिए बेसिकली, ठीक है ना? That means I can write here energy of your nth orbit, पूरे कांस्टेंट एक जगह रख लीजिए,
माइनस ऑफ योर 2 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, k स्क्वायर कांस्टेंट है, e टू द पावर ऑफ 4 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय h स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इनटू यहाँ पर बचा कितना z स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर n स्क्वायर। ठीक है, इसकी पूरी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं डाल के तो विल बी गेटिंग द एनर्जी ऑफ योर nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ योर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। फॉर्मूला याद आया? केमिस्ट्री में भी आप लोग ने पढ़ा था, एनर्जी ऑफ योर nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth, एनर्जी ऑफ योर nth इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ योर इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स nth ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? En is equals to minus 13.6 into z square by your n square। ठीक है ना, माइनस के साथ होता है बेसिकली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है ना, अब एनर्जी लेवल लिख लीजिए बेटा पूरा हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। सो इफ आई एम राइटिंग हियर, जल्दी जल्दी बोल दीजिए, energies of different energy levels in hydrogenic atoms or hydrogen like atoms, I can say hydrogen like atoms। हाइड्रोजन लाइक एटम्स बोले तो और बोलो, हाइड्रोजन लाइक एटम्स बोले तो H हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, दिस इज +1 सॉरी +2, हाइड्रोजन He+, हाइड्रोजन He+2, He+3, समथिंग लाइक दिस। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना? इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस वन टू एनीवन? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बेटा, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्लियर है? चलिए, nth ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला क्या था? एनर्जी ऑफ योर nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? -13.6 इंटू z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n इज इक्वल्स टू 1 ले लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। E1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ योर 13.6 इंटू z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आती है माइनस ऑफ योर 13.6 into your z square इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट में। उसी तरह से E2 is equals to minus of your 13.6 into z square divided by 2 square, that will be equal to minus of your 3.4 z square electron volt। उसी तरह से एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट that is E3 is equals to minus of 13.6 into z square divided by your 3 square, so that will be equal to minus of 1.51 into your z square electron volt। ठीक है ना? ये तो बटीफाई करके रहना बेटा थोड़े तक तो भी। E4 will be equal to your minus of 13.6, तो कैलकुलेशन जरा आसान हो जाएगा। So this will be for the fourth orbit 4 square, that will be equal to minus of 0.85 z square electron volt। Energy for your fifth orbit minus of your 13.6 into z square divided by 5 square, so that will be equal to your minus of 0.54 z square electron volt। उसी तरह से E6 के लिए minus of 13.6 into z square divided by 6 square, that will be equal to minus of 0.37 z square electron volt। ठीक है? हाँ, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए बेटा कितना है। यहां से यहां तक अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें, that will be approximately 10.2, isn't it? Z square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड और थर्ड का अगर गैप देखो मैं, इट विल बी 1.89 Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस देखो अक्रॉस 0.66 Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ और फिफ्थ का डिफरेंस देखो, दिस विल बी 0.31 Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
फिफ्थ और इसका डिफरेंस देखो, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.17 z स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. टफली देख लीजिए आप लोग एक बार, विल गेट रफ आइडिया रिलेटेड टू दिस. क्लियर है? इज इट क्लियर? Shit. अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट बेटा, इफ एन इलेक्ट्रॉन jumps from energy level n2 to energy level n1, then energy will be released. That energy released is how much beta? Delta E is equals to, I told you, h nu, and that will be equal to hc divided by lambda, isn't it? So we have got one standard formula, I'm not deriving it. 1 by lambda is equals to your r into your z square into 1 by, this one is your n1 square minus 1 by your n2 square. I hope you remember this formula from your chemistry also. So 1 by lambda is equals to your r into your z square. R is your Rydberg's constant beta. So value of r is 1.097 into 10 to the power of 7 meter inverse. R is known as of your Rydberg's constant. If I am writing the wave number represented by your nu bar, that is nothing but reciprocal of your wavelength. So wave number will be equal to your how much? That is nu bar will be equal to your r into your z square into, this one is 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Clear beta? Is it clear? Sure. Now listen, it's something very important for us. One small tip I can say, keep a star mark. Different methods to find the number of spectral lines. The number of spectral lines. Okay. Different methods to find the number of your spectral lines. फॉर्मूला याद है किसी को? अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम nth लेवल टू mth लेवल, if electron jumps from which level beta? Nth level to mth level. Okay, then number of your spectral lines. Number of your spectral lines is given by, याद है फॉर्मूला किसी को? Capital N is equals to, this one is N minus of your M into N minus M plus 1 divided by 2. ये अपना स्टैंडर्ड टिप है बेटा, स्टैंडर्ड टिप भी समझो अब इसको. N से अगर M आ रहे हैं, दिस विल बी द रिलेशन. अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम nth लेवल टू द ग्राउंड स्टेट बेटा, isn't it? Like say एग्जाम्पल अगर ले रहा हूं, if electron jumps from nth level
to ground level. To ground level. Ground level means m value will be equal to 1. So if this is becoming 1, this is also becoming 1, then n value will be equal to your n into your n minus 1 divided by 2. So this will be the formula. If I'm jumping from your nth orbit to the ground level, this will be the formula. Okay? Is it clear? Agar an electron is jumping from your nth orbit to your mth orbit, this is the formula. Agar if electron is jumping from your nth level to the ground level, this will be the formula. Clear है? चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं, देख लीजिए, प्रॉब्लम कर लीजिए. मान के चलिए if electron jumps from, if an electron jumps from n is equals to 3 to n is equals to your 1, then number of spectral lines, then number of your spectral lines. बताइए जल्दी से. Number of your spectral lines will be equal to your how much? 3. Aya? So n is equal, so I can use this formula, n minus of your m into n minus of your m plus 1 divided by your 2. n की वैल्यू क्या है बेटा? 3 और m की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1. ठीक है? So this will be equal to your n is equals to your, this one is a 3 minus 1 into your n value is a 3 minus 1 plus 1 divided by your 2. Listen, this will be equal to 6 by 2. This will be equal to 3. See here, 3 minus 1, 2. Isn't it? 2 plus 1, 3. Isn't it? And 3 minus 1, 2. 3 2 is 6. 6 by 2. That will be equal to your 3. Clear, beta? Is it clear? Clear है? चलो एक एग्जांपल और लिख कर लीजिए. मान के चले, if I tell you hydrogen atom is excited from ground state to another state with principal quantum number of equal to 4. Then calculate the number of spectral lines. Then number of spectral lines कितने होंगे बताइए? Number of your spectral lines कितने होंगे? 6, obviously. Isn't it? कहां से जा रहे बेटा? n is equals to 4 से लेके you are going to your ground state. Hydrogen atom is excited from ground state to your another state with the principal quantum number equal to your 4. And this will be equal to your n is equals to your n into your n minus 1 divided by 2. So that will be equal to 4 into 4 minus 1 divided by 2. So it is a 4 minus 1, 3 divided by 2. 12 divided by 2. That will be equal to 6. Clear? Is it clear? चलो आप लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो याद होगा ये. स्टिल एक बार मैं आपको लिख देता हूं so that it will be easy for me to do the numericals. Hydrogen spectrum. First one, Lyman series बोलते हैं. First one is your Lyman series. Next one is about your Balmer series. Isn't it? And third one is your Passion. Next one is your Bracket.
and the last one is your fund series. ठीक है ना? Lyman series के लिए देखो बेटा क्या होता है, we are going from where to where बेटा, n1 is equals to 1 से we are going here, n2 is equals to 2 3 4 so on. It lies in your UV region, याद होगा आप लोग सभी को. और बामा सीरीज मतलब you are going from n2 is equals to 2 to your n2 is equals to 3 4 5 so on, and it lies in your visible region. It lies in your visible region. और पैशन सीरीज में n1 will be equal to your, ये 1 ही होगा ना बेटा सर, n1 is equals to your, ये हो जाएगा 3 और n2 is equals to your 4 5 6 gone. This will lie in your infrared region. This will lie in your infrared region. Then bracket series. For bracket series, n1 is equals to 4, n2 is equals to your 5 6 7. This also lie in your infrared region, isn't it? Then for fund series, n1 is equals to 5 and n2 is equals to 6 7 8 go on. So this also lies in your infrared region. Okay, the radius of the orbit is in the range of 10 to the power of minus 2 meters beta, that is 10 to the power of minus 15 meters, that you can do in the nuclear physics. So just remember this series, that is more than enough. Okay, near infrared region, that you can remember, that's not an issue. अब देखो मैं यहाँ पर छोटा सा आपको एक ट्रिक देता हूँ to do the problems, very important, to find the shortest wavelength, to find the shortest wavelength of radiation. ठीक है? So we are talking about to find the shortest wavelength. So we can directly use the relation beta, that is lambda minima is equals to your n square divided by your r into your z square. ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n स्क्वायर डिवाइडेड बाय r into your z square. जैसा मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे for z is equals to 1 hydrogen atom, isn't it? So z is equals to 1, lambda minima will be equal to how much beta? N square divided by r. For Lyman series, if I am taking for Lyman series n is equals to 1, so lambda minima will be equal to 1 by r approximately, isn't it? Z is equal to 1 means hydrogen like atom. And therefore Balmer series beta, what will be the lambda minima? For Balmer series, n value is equals to 2. So lambda minima will be equal to 2 square is nothing but 4. So it is 4 divided by r. So for minimum wavelength, frequency will be maximum. Make sure of that one beta. For minimum wavelength, frequency is maximum. रेसिप्रोकल है ना बेटा, इसलिए frequency is maximum. ये बात याद रख लीजिए. ट्रिक क्लियर है सभी को? लैम्ब्डा मिनिमा इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय r into z स्क्वायर. फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम z वैल्यू इज इक्वल टू 1. तो लाइमन सीरीज, बामा सीरीज कुछ भी पूछा तो डायरेक्टली n की वैल्यू डाल दो, आराम से निकल जाएगा. उसी तरह से नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, टू फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ, टू फाइंड maximum wavelength. टाइम सेविंग टिप है बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस कर ले तो कम से कम टाइम में अपन ऐसे वाले क्वेश्चंस करके आ सकते हैं. लैम्ब्डा मैक्स विल बी इक्वल टू योर n into your n plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n plus 1 into 1 by Rydberg's constant. ये हो गया लैम्ब्डा मैक्स निकालने का फॉर्मूला. थोड़ा बड़ा है लेकिन आराम से निकल जाता है बेसिकली. ठीक है ना? लैम्ब्डा मैक्स इज इक्वल टू योर n into n plus 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n plus of your 1.
और उस डायरेक्टली कैन राइट हियर n into n plus 1 whole square divided by 2n plus 1 into 1 by r. जैसे मान के चलो फॉर लाइमन सीरीज इफ आई एम राइटिंग फॉर लाइमन सीरीज n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, isn't it? तो n की वैल्यू अगर 1 है तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, एक बार देख लीजिए लैम्डा मैक्स विल बी इक्वल टू योर 1 into 1 plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 1 is 2 plus 1 into 1 by r. तो कितना हो गया? This one is how much beta? 1 plus 1 is 2. 2 square is nothing but 4. 4 divided by your 3. Okay. So this one is how much beta? 1 plus 1. So this will be equal to 2 square. 4 divided by 3 into your r. देखो for calculation purpose 1 by r की वैल्यू आप लोग डायरेक्टली 912 एंगस्ट्रॉम्स याद रख सकते हो. 1 by Rydberg's कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 91 by 12. क्लियर है? Is it clear? कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए एक बार. मान के चले in the spectrum of hydrogen, in the spectrum of hydrogen मुझे चाहिए the ratio of the longest wavelength in the Lyman series, in the Lyman series to the longest wavelength in the Balmer series, ठीक है. I'm giving you the options. 27 divided by 5, 5 by 27, 4 by 9 and 9 by 4. Okay. First calculate the lambda max. Lambda max का फॉर्मूला देखिए. What is the lambda max फॉर्मूला बेटा? n into your n plus 1 इसका पूरा होल स्क्वायर divided by 2n plus 1 into your r. So lambda 1 will be equal to how much beta? N is equals to hydrogen like atom, the longest wavelength for Lyman series. Lyman series means n is equals to 1. Lyman series के लिए बोल रहे हैं n is equals to 1. यानी कितना बन जाएगा बेटा? n is 1 plus 1 4. 4 by 3r. 4 by your 3r. Isn't it? The next one is for your Balmer series. For your Balmer series means n is equals to 2. That means lambda 2 will be equal to 2 into 2 plus 1, 3. Isn't it? 3 to the 6. 6 square is 36. 36 divided by 2 into 2, 4. 4 plus 1, 5. 36 into your 5 by your r. ठीक है ना? इन दोनों का रेशियो lambda 1 divided by lambda 2. That is equals to how much for me? 5 by 27. अगर ये फॉर्मूला याद ना होता तो आप लोग को पूरा आपको इक्वेशन डाल के लिख के पढ़ना पड़ता. 1 by lambda is equal to r into 1 by 1 square by n square वगैरह करके करना पड़ेगा. जनरली जो बड़ा मेथड हो जाता है बेसिकली. क्लियर है सभी को? Any doubt in this one to anyone? Is it clear? चल ठीक है बेटा.
11:30 हो रहा है बेटा, आज के लिए अभी काफ़ी है। कल और कुछ रह गया तो कल क्लास में कर लेंगे। आज लो आप लोग थोड़ा ड्यूअल नेचर को आप लोग पढ़ लीजिए और थोड़ा न्यूमेरिकल्स और पीवाईक्यूज खत्म कर लीजिए बेटा, ठीक है। ओके चलो, टेक केयर, बाय।